Hello students, welcome back to another tutorial from Agencies of Pollination. This is the last part. Last class रे हमें पढ़ी थिलु Agencies of Pollination means in non-living. In non-living means abiotic. Abiotic रे हमें दी प्रकार pollination पढ़ी थिलु. First one is water pollination known as an hydrophily and wind pollination known as an anemophily. आज हमें पढ़िबा biotic agents means living organisms through रे केमती pollination हुए. तीन प्रकार pollination आज हमें पढ़िबो. First one is entomophily means pollination is carried out with the help of the insects like कोथरे हुए ना salvia, rose, jasmine एगुडा रे entomophilous pollination हुए. Then ornithophily means if the pollination is carried out with the help of birds known as an ornithophily, and lastly known as an chiropterophily means pollination is carried out with the help of the pets. Okay, so again starting with the pollination because all are interlinked with each other. So again and again saying so repeatedly repeat करूची. So what is pollination? Pollination हमें काकू कहवा. Pollination is defined as transfer of matured pollen grain from anther to stigma of same flower or different flower of same mother plant or different flower of different plant with the help of agents. With the help of agents means biotic agents and abiotic agents means living and non-living agents. Either with the help of birds, then insects, different kinds of insects and animals and birds. एगुड़ा through either pollen grain टा जो transformation हुए, सेठी pollination हुए, या with the help of the wind and water, hydrophily or anemophily pollination भी ताको कुहाई चलो. Okay, pollination का definition हमें already clear है सच्चो. What is pollination? Then types of pollination. कितने प्रकार pollination हमें पढ़ी चु? ना दी प्रकार pollination पढ़ी चु. First one is self pollination. Second one is cross pollination. Then what is self pollination now? When the pollen grain or the transfer of matured pollen grain from anther to stigma of same flower or different flower of same mother plant. Same mother plant. गोटे ही plant रो different flower भितरे जो ते transformation तो हुए of pollen grain from anther to stigma either गोटे flower भितरे होगा या फिर दीटा अलग flower भितरे होगा सेठी भी pollen grain टा जो ते transfer हुए सेठी pollination हुए या फिर एक केस रे कौन हुए ना means self means निजो through रे pollination का से करिबो. Okay, either गोटे plant रो दीटा अलग flower भितरे pollination होगा या फिर गोटे प्लांट रो गोटे ही फ्लावर भितरे पोलन ग्रेन टा ट्रांसफर हो मींस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बट इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट प्लांट. इतरे गोटे ही प्लांट इन्वॉल्व हो. राइट, देन सेल्फ पोलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स. केते प्रकार सेल्फ पोलिनेशन हमें पढी दिलु ना. गोटे होची ऑटोगेमी, सेकंड वन इज जाइटेनोगेमी. ऑटोगेमी एंड जाइटेनोगेमी. व्हाट इज ऑटोगेमी नाउ? ऑटोगेमी मींस सेल्फ निजो भितरे ही सेल भितरे ही pollen grain का transfer होगा. Okay, when the pollen grain are transferred from anther to stigma of same flower is called as an autogamy. गोटे flower, गोटे mother plant present अछि. Self pollination means गोटे ही plant present अछि. से गोटे plant रो गोटे flower भितरे pollen grain का transfer होगा from anther to stigma. So autogamy, when the pollen grain are transferred from anther to stigma of the same flower is termed as an autogamy. It is possible when anther and stigma are close together. जब anther और stigma टा पाखापाखी थिबे सेठी ही autogamy टा करया पे सुविधा हुए because pollen grain टा easily transfer हे परिबो from male to female. Then autogamy are of two types. हमें जानचो. First one is homogamy, second one is clistogamy. In case of homogamy, it occurs in open flower or chasmogamous flower. ताको हमें chasmogamous flower भी कहे परिबो. Example Catharanthus and Mirabilis. Whereas in clistogamy कोठी हुए it occurs in closed flower. Homo means open flower, clisto means closed flower. और closed flower भी हमें ताको कहे परिबो या फिर clistogamous flower भी हमें ताको कहे परिबो. So yeah, example कोना Commelina bengalensis and Arachis hypogaea are the example of clistogamy.
Then after autogamy kon achi geitonogamy, when the pollen grain of the flower of one plant is transferred to the stigma of the flower of another plant is termed as an geitonogamy. It is morphologically cross pollination but genetically it is self pollination. So pollination kon बुझेला, pollination का कहा जाए, pollination definition हमें पढ़लु, then types of pollination देखलु, पढ़ना self pollination भितरे कौन जाउची, autogamy and geitonogamy. Then autogamy has been further differentiated into two types. First one is homogamy, second one is cleistogamy. I hope you all are remembering, again and again से जिनसे उड़ा को repeatedly कही चलची, so try to understand. Then advantages भी हमें बुझीचु, pollination रे advantage जानचु, self pollination रे भी advantages देखिचु. एवुडा सब कोन self pollination, the process is well secured as the flowers do not have to depend upon external agencies for fertilization. Flower कोन करबो ना external agencies ऊपर depend करबो नहीं fertilization पाई, because से self निज भितरी ही से pollination करबो, एटा होचे तार सबुठु बड़ advantages. Then come cross pollination. Cross pollination is also known as an allogamy. When the pollen grain of the flower of one plant is transferred to the stigma of the flower of another plant having same species or different species is termed as an cross pollination. और ताकू हमें कौन कहि परबा ना allogamy भी कहि परबा. Then cross pollination are of two types. जदि same species भितरे ट्रांसफॉर्मेशन टा हुए ताकू जेनोगेमी कहंदी, और सेम स्पीशीज भितर जदि ट्रांसफॉर्मेशन होत हो देन ताकू जेनोगेमी कहंदी. एंड हाइब्रिडाइजेशन काकू कहंदी ना जदि डिफरेंट स्पीशीज भितर ट्रांसफॉर्मेशन टा होत हो पोलन ग्रेन ताकू हाइब्रिडाइजेशन कहंदी. ओके, देन हम देखिछु तार कोन क्रॉस पोलिनेशन करबा द्वारा कोन होय ना न्यूमरस लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स एंड दे आर हाईली डिजीज रेजिस्टेंस. हाईली डिजीज को रेजिस्टेंस करते it brings variations in the offspring. दीटा अलग-अलग प्लांट ता न्यू variety of offspring को से produced करिवो. Then the plant produces through cross pollination are more resistant to disease. जो प्लांट ता क्रॉस पोलिनेशन थ्रू रे प्रोड्यूस्ड हेता है सेटा रेजिस्टेंट करिवो डिजीज को. ओके, it helps in process of hybridization. I mean, it helps in process of hybridization, it helps in process of genogamy, it also helps in process of evolution, because evolution to evolution से change ही जाउची. Then तापर हम कौन पढ़थिलु agencies of pollination. Agencies of pollination कोन? In cross pollination, the pollen grain are unable to reach their destination, so they have to depend upon biotic agents and abiotic agents. Abiotic agents का को कहबा ना non living agents को abiotic agents कहबा and living agents को biotic agents कहबा, right? Then abiotic agents के उडा को wind और water ए दीटा जक होची source जो थ्री की abiotic agents होची means pollination होची. Wind को कौन कहती anemophily. If the pollination is carried out through wind, it is known as an anemophily. If the pollination is carried out through water, it is known as an hydrophily. Okay, so हमें wind pollination लो कौन example लेथिलु ना Gia, Oryza and water pollination लो कौन example लेथिलु Vallisneria, Hydrilla. आज हमें पढ़िबा biotic agents. Biotic agents कौन? biotic agents का थ्रू रे insects और animals मान को थ्रू रे biotic agents हुए. ओके, एग्जांपल ornithophily. आज हमें कौन पढ़ना ornithophily. If the pollination is carried out through birds, it is known as an ornithophily. Then entomophily. Entomophily का को कहती जदि insects थ्रू रे pollen grain ट्रांसफर हुए गोटे फ्लावर रो आउटे फ्लावर पाको आइदर गोटे प्लांट रो स्पीशीज रो आउटे प्लांट रो स्पीशीज पाको जदि ट्रांसफॉर्मेशन टा हुए pollen grain टा, then with the help of insects जदि insects थ्रू हुए then ताको entomophily कहती. जदि birds help हुए ताको ornithophily कहती. जदि birds थ्रू हुए ताको chiropterophily कहती. अच्छा हम गोटे गोटे डिस्क्राइब करना. Listen, what is entomophily? Flowers pollinated by insects is known as an entomophilous flower. Flowers pollinated with the help of insects or by insects. जदि insects through
flowers टा pollinated हुए means anther और stigma भितर जति pollen grain टा transfer हुए with the help of insects then सेठी कोन कोंदी एंटेमोफिली ताको एंटेमोफिली कोंदी या फिर ताको एंटेमोफिलस फ्लावर कोंदी फॉर एग्जांपल देयर कोन एग्जांपल रोची साल्विया Salvia is very peculiar in entomophilous pollination. Salvia is बहुत ही important entomophilous pollination पाई. First one is salvia, second one is hibiscus, then thirdly helianthus, fourthly rose, lotus, jasmine. ये उनका सबू insects थोड़े pollinated way means flowers are pollinated by insects is known as an entomophilous flower. For example, salvia, hibiscus, helianthus, rose, jasmine एगुड़ा सबू होची entomophilous flower and the process is known as an entomophily. Okay, so one example हमें देखिए salvia case. In case of salvia केस रे चारटा स्ट्रक्चर A B C D चारटा स्ट्रक्चर भितर केमती pollination होची salvia रे in this flower a flower कोन अछि दीटा stamen present अछि in this flower two stamen are present and each stamen consisting of two anther lobe. Okay, एतरे दीटा stamen present अछंती आ से दीटा जाक stamen consist करथिबे दुईटा anther lobe and the two anther lobe of each stamen are widely separated. Get clear? A flower रे in this flower there are two stamen याको पाखरे दुईटा stamen present अछि. Okay, दुईटा stamen present अछि ए flower रे दुईटा stamen present अछि and each stamen consisting of two anther lobe. anther lobe हमें पढिछु कोडा को structure of flower section में हमें पढिछु starting रे anther lobe कोडी present थाए. So in this flower there are two stamen दुईटा stamen present अछंती and each stamen consisting of two anther lobe. अब ए stamen गुडा को consist करथिबे दुईटा anther lobe consist करथिबे. So after that the two anther lobe are separated from each other means they are separated by prolonged cough connective filament means prolonged cough connective which moves freely on filament. एमाने अलगा अलगा सेपरेट ही करछथि एंड से माने मूव करथि कोठी ना freely on filament like turnpike and lever mechanism. देखो turnpike टा टर्न होले केमति देखा जाय एमति टाइप रो तो एटा turnpike टाइप रो मुड़ी के अछि एंड याको कोन कह जेबो ना lever mechanism टाइप रो भी शो करूची. turn pipe and lever mechanism. Turnpike and lever mechanism type रो ए flower टा means ये consist करथिबो दुईटा anther lobe आ से दिले जको anther lobe consist करथिबे means से दिले जको anther lobe separated हेतिबे from each other by prolonged cough connectives which moves freely on filament. एक पार्ट होची filament. Okay, in salvia entomophilous pollination is very peculiar. In this flower there are two stamen and each stamen consisting of two anther lobe. They are separated from each other by prolonged connective filament means prolonged connectives which moves freely on filament जे freely move करूथबो filament ऊपर like turnpike and lever mechanism. केमती टाइप रो ना turnpike ए पाइप टा टर्न हे गला परे एमती टाइप रो देखा जाय. सो एटा turnpike और lever mechanism टाइप रो देखा जाय मींस एटा होची स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बिसरे से कहिला which moves freely on filament. एटा filament से तो अटैच दे के लेबो एंड एमटी से मूव करबो upward direction रे like this so that insects आसे क्या भितरे बसबो एंड ताको भितरे सी pollen grain को मेल रो फीमेल रो मेल पाखरे आकी दबो. So in this flower there are two stamen. The two anther lobe of each stamen are widely separated from each other by prolonged connectives which moves freely on the filament. Okay, like turnpike and lever mechanism. The upper anther lobe is fertile. ए जे ऊपरे गुटे अछि anther lobe और तळे गुटे anther lobe अछि. So upper anther lobe is fertile and lower anther lobe is sterile. कहिछि दीटा stamen ए flower रे दीटा stamen present अछि and
एंड से जो स्टेमेन कंसिस्ट करथबे दुईटा एंथर लोब ए एंथर लोब सेपरेटेड हेथिबे फ्रॉम ईच अदर बाय prolonged curved connectives which moves freely on the filament ए पार्ट होची filament which looks like turnpike and lever mechanism ये lever mechanism type रो शो करे and upper part टा कोन fertile whereas lower anther lobe is known as a sterile upper part टा होची fertile and lower part टा होची sterile in natural condition जतरे natural condition आसीबो the connective remain upright मु कहि छी connective टा ऊपर को ही जिवो जतरे natural condition आसीबो connective टा ऊपर को ही जिवो सो दैट ए पार्ट होची connective टा ऊपर को हेला पर कोन होबो ना insects इजिली आसी के फ्लावर भितरे पसी पाइबो when the insects enters into the corolla tube enters करबो या भितरे insect आसी के या भितरे एंटर करबो ओके या भितरे आसी के insect एंटर करबो एटा होची corolla tube when insects enters into the corolla tube जते बेले नेचुरल कंडीशन हबो ए फ्लावर ता कोन होना ऊपर को ही जो अपराइट डायरेक्शन रे अपराइट डायरेक्शन हे गला पर कोन होना इंसेक्ट्स ता इजीली आसी के corolla tube भितरे पसी परिबो corolla tube भितरे पसेला when the insects enters into the corolla tube it pushes the lower sterile lobe in such a way that the upper fertile lobe touches the back and insects back of the insects and dust to the pollen grain there ye kon कहला ना when the insect suppose this one is the corolla tube ये part होची corolla tube this part is the corolla tube एटा होची upper anther which is known as a fertile एटा होची lower anther which is known as a sterile upper part होची fertile lower part होची sterile when the insects a part होची insects enters into the corolla tube the upper fertile lobe when the insect enters into the corolla tube so first of all kon karbo it touches it pushes the sterile part ये kon karbo na ye push karbo sterile part को it pushes the sterile lobe in such a way that the upper fertile lobe touches its back ये kon karbo ये जब push करबो ए part को तो ये से टच करबो त back रे and सेठी kon करबो से dust कर देबो means pollen grain को से सेठी रिलीज करबो ए part ता आसी की या एंड रे जब पहुंचबो ये dust कर देबो pollen grain को when the insects enters into the corolla tube it pushes the lower sterile lobe in such a way that the upper fertile lobe touches its back and dust the pollen grain there से से कोन करबो ना dust कर देबो pollen grain को okay means a part रे या end part रे से dust कर देबो when the same insect ता जतले visit करबो another flower रे जोथरे की ए केस रे कोन होबो ना एटा होचे protandrous flower means androecium matures before the gynoecium androecium mature करि जिवो gynoecium पूर्व सब केस रे कोन ना gynoecium ता mature करे androecium पूर्व बट ए केस रे कोन होए ना androecium ता mature करबो gynoecium पूर्व means it is protandrous flower okay the flower is protandrous means androecium matures before the gynoecium which prevents self pollination and achieve cross pollination एक रे कोन होए ना क्रॉस pollination वे क्रॉस pollination कोन कहिथिले आडी कागु क्रॉस pollination थ्रू रे क्रॉस pollination ता साल्विया रे वे साल्विया केस रे क्रॉस pollination साल्विया केस रे cross pollination ता हुए because it avoid करे self pollination को okay the flower is protandrous where androecium matures before the gynoecium which prevents self pollination and achieve cross pollination ये achieve करबो cross pollination तो हमें कौन बोली when the insect enters into the corolla tube it pushes the lower sterile lobe in such a way that the upper fertile lobe touches its base and dust the pollen grain gases it कौन करबो ना dust करबो means release कर देबो pollen grain को सेठी when the same insects visits another flower से insect ता जतल visit करबो out a flower जोठी की gynoecium matures करथबो androecium पूर्वरु सेठी से कौन करबो ना स्टिग्मा से कैसे तापर स्टिग्मा टा बेंड हेकी थिबे आउ से स्टिग्मा टचेस द बैक ऑफ द इंसेक्ट्स स्टिग्मा कोन करबो ना बैक ऑफ द इंसेक्ट्स माने पछ पार्ट रे इंसेक्ट्स रो पछ पार्ट रे से टच करबो जोतरे की पोलन ग्रेन से आनी थबो गोटे फ्लावर रो
ठीक अछि जो कि पोटेंडस फ्लावर से नहीं के आसबो पोलन ग्रेन ता सेठी से रिलीज कर देबो एही हिसाब रे साल्विया रे होची मींस इंसेक्ट्स थ्रू रे ही एंटोमोफिलस पोलिनेशन होची मींस साल्विया होची गोटे फ्लावर अछि जो कि प्रोटेंडस फ्लावर ताको कहू जो हमें प्रोटेंडस फ्लावर कोन होय ना एंड्रोसम ता मैच्योर करे गाइनेशियम पूर्वरु एतरे कोन होय ना इंसेक्ट्स ता एंटर्स करी जब कोरोला ट्यूब भितरे ता पर से कोन करबो ना से टच करबो लोयर फैटाइल ऊपरटा होची फर्टाइल लोयर होची स्टेराइल तो से लोयर स्टेराइल लो को एते जोर से प्रेस करबो पुश करबो जे ऊपर पार्ट आसे के ता तळ पार्ट रे आसे के लागि जिवो लागि आला माने कोन हो से डस्ट कर देबो पोलन ग्रेन डस्ट एकला मीन से पोलन ग्रेन को नेकी उडी के चली गला आउट ऑफ फ्लावर पाखो जो थरे की गाइनेशियम ता मैच्योर हितवे एंड्रोसम पूर्वरु गाइनेशियम मैच्योर है एंड्रोसम पूर्वरु कोन हो तो स्टिग्मा ता तोलको हिजो बिकॉज़ फ्लावर टा नेचुरल कंडीशन रे नथिबो सेतरे तो स्टिग्मा टा तोलको हिजो तो इजीली से कोन करबो ना इंसेक्ट्स रो लोअर पार्ट रे से टच करके से पोलन ग्रेन को रिसीव करि परबो when the pollen same insects visits the flower where gynoecium is mature and stigma has bent down the stigma touches the bag and anther and receives the pollen grain se kon karibo na receives karibo pollen grain को after that come ornithophily means birds same case birds गोटे फ्लावर ऊपर बसबे गोटे प्लांट ऊपर बसबे देन से माने आउट फ्लावर पाखो फ्लू करके चल जेबे देन सेठी से पोलन ग्रेन टा गोटे फ्लावर रो आउट फ्लावर पाखरे नेकी पहुंचे देबे तो एथरे कोन छै इफ द फ्लावर्स आर pollinated by birds they are called as an ornithophilous flower ताको कोन कहबा ना ornithophilous flower just one second ornithoflower if the flowers are pollinated by birds or pollinated through birds or with the help of the birds you can write according to your so birds ornithophily means ornithophilous flower if the flowers are pollinated with the help of the birds through रे जदी pollination टा हुए then ताको हमें ornithophilous flower कहबा and the process is known as an ornithophily ए प्रोसेस टा को कोन कहती ना ornithophily कहती for example erythrina 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 which is an example then Butea monosperma Butea monosperma erythrina Butea monosperma then how kon example achi bignonia 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 are the example of ornithophilous flower तो कौन example रहिला ना Butea monosperma Bignonia agave crivella erythrina एउडा सब होसी example of ornithophilous flower means एतरे कोन होय ना birds टा pollen grain टा ट्रांसफर करबो गोटे फ्लावर रो आउटे फ्लावर okay then the flowers are large बड़ा बड़ा साइज रो हितबो and showy means आखी को सेटा देखा जातो means सेटा माने bright colors हितबो with nectar glands set present हितबो and the flowers are large showy and bright colors dark colors हितबो जोड़ा को ornithophilous flowers जोड़ा को large हितबे showy हितबे means आखी को सेटा देखा जातो and bright colors color टा पूरा पूरी bright then flowers are scentless if flowers जोड़ा को scentless माने good smell कोरमतवे they are scentless then copious and unicellular genus nectars is produced कौन copious
genus nectar. Ornithophilus flower इटा जुटे important part copious and mucilaginous nectar. ये तीन जिनस ornithophilus flower रे produced हुए. Okay. Copious, C-O-P-I-O-U-S, copious, and mucilaginous, M-U-C-I-L-A-G-E-N-O-U-N-S, mucilaginous nectar is produced. This nectar is more important to bird as the drink food. ए दिजा देखो जिनस से माने flower रू पाती के ना bird. Birds माने copious और mucilaginous nectar सुधा को flower रू पाती और से use करती as a food material. से देखो birds माने किम्ती use करती as a food material. Food material हिसाब रे copious और mucilaginous nectar को use करती. Okay, ठीक ना bird. Birds माने copious और mucilaginous nectars को use करती as a food for their food. Then this nectar is more important to bird as they drink the food. It is chiefly composed of sugar. Sugar, copious और mucilaginous nectars टा sugar रे तियारी हो, means चीनी, sugar. The pollen grain are sticky. अच्छा केमती पोलन ग्रेन टा ट्रांसफर हो गोटे फ्लावर रो आउटे फ्लावर पाको केमती बार्स माने ट्रांसफर करके नेकी जिवे विथ बिकॉज़ द फ्लावर्स इज स्टिकी. फ्लावर नो पोलन ग्रेन टा फ्लावर रो पोलन ग्रेन टा स्टिकी हेतिबो मींस से इजीली एडेड हेतिबो टू द बॉडी ऑफ द बर्ड. बर्ड रो बॉडी को इजीली चिपकी जिवो. चिपकी गला पर बर्ड कोन करबो ना ट्रांसफर करबो पोलन ग्रेन टा नेकी इजीली जिवो गोटे फ्लावर रो आउटे फ्लावर को या फिर गोटे प्लांट रो आउटे प्लांट को से जगह ornithophily pollination टा होय. So बुझला the flowers are large, showy and have bright colors. Flowers को large हेतबे, showy हेतबे and bright colors हेतबे. Flower are scentless. Flower को good smell करनोतबे. Then copious and mucilaginous nectars are produced in case of in flowers which are useful for birds to as they drink the food, as they take the food, and it is chiefly composed of sugar. Sugar थोड़े से त्यारियता sugar ही त्यारियता. The pollen grain are sticky to get adhered to the body of the birds. Bird रो body से तो pollen grain टा आराम से चिपकी की रही जिवो so that bird कौन करिबो ना easily pollen grain को transfer करिबो from गोटे flower रो आउटे flower को. Then lastly आसला कोन Chiroptera. What is Chiroptera? If the pollination are carried through bats, B-A-T-S. जदि bats through रे जदि pollination टा हुए, then ताकू Chiroptera कहती. It is the pollination carried out by bats. जदि bats through रे हुए, then ताकू Chiroptera और Chiroptera pollination कहती. Okay, flowers are large. If flowers are large हितवे and flowers are large topped so that the birds can hold onto the flowers. Flowers are large हितवे so that कोना birds easily ताकू गोटे जगह रो आउटे जगह को ट्रांसफर करें. मींस गोटे फ्लावर रो पोलन ग्रेन टा ट्रांसफर होबा आउटे फ्लावर रो पोलन ग्रेन पाको. Okay. Flower generally open at night. A flower गुड़ा को केते बड़ा ओपन है generally at night. राती रे ए flower गुड़ा को ओपन हुए. Then as bat is nocturnal animals means nocturnal animals. This bird is nocturnal because हमें आपको रात में ही देखिए बापू पाओ and can transport pollen grain up to 30 kilometers. ये माने 30 kilometers तक ट्रांसफर करी पाएंगे pollen grain को. Flowers give strong scent like that of ropen fruits. Ropen fruits means पाचिला फल टाइप रो flowers गुड़ा को smell करती and ए flowers गुड़ा को large है so that माने birds माने easily transfer कर पाएंगे pollen grain को from गोटे रू आउटे plant रो from one plant to another plant.
pollen grain are produced in large number as compared to bird pollinated flower. ये pollen grain यांकर pollen grain means Chiroptera रो pollen grain टा produced होगा in case of Chiroptera flower pollen grain गुड़ा को produced होगा in large amount.